वर्दे। भगवान सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए हमें सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष साहित्य एकेडमी माधव कौशिक जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे चेयरपर्सन का स्वागत करें। सबसे पहले शिवा रेड्डी जी, जिनका आज बर्थडे भी है, तो ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत। मैडम शुभश्री लेंका जी का स्वागत। प्रतिभा नंद कुमार, निगत साहिबा मैडम, हाँ बोधिसत्वा जी, कमल वोरा जी, रंजीत दास जी, आपको कैसे भेजूं? मोहन सिंह जी, नहीं होगा। हाँ भेज दिए। यहीं आ जाइए, आप यहीं आइए, आप यहीं As you followed a tradition, we will continue that. इसमें माइक नजदीक रहे। तो है ना, जूते भी कहीं दिखा। मैं भी डाल लूँगा जनवा में। इसको डाल लीजिए, इसको डाल। I request all the participants and everybody present here to please put their mobile phones on silent mode. The time allotted to each speaker is 8 to 10 minutes maximum. After the session, we will have a group photo. And one more announcement, at 6 p.m. today at Anjani Auditorium, we'll have a valedictory session and a group photo of all the participants who gave their valuable speeches in the Literature Festival. So we will start today's session. The first speaker of the session today is Mr. Ranjit Das. Ranjit Das ji is an eminent Bengali poet. He has published 11 books of poems, 2 collections of literary essays and 1 novel. He has also edited a large collection of poetry from Bangladesh titled Bangladesher Shrestha Kobita in 2009. He has received the prestigious Rabindra Puraskar in 2013. His numerous other awards include Birendra Chattopadhyay Memorial Award, Paschim Banga Bengal Academy Award, and Ramnath Bhattacharya Foundation Award. He has read his poems at different national and international meets. He visited Croatia on a literary tour under India-Croatia Cultural Exchange Program. So, warm welcome to Mr. Ranjit Das ji. Thank you. Can you hear me? Yeah. Good afternoon, everybody. Namaskar. So, my first poem is a straightforward celebration of the theme of this festival, India at 75. I have composed it in my elementary English myself to avoid the hassle of translation just a few days back. I am very proud of my country and I have tried to convey that. So,
हेलो हेलो थोड़ा सा राइट हो जाइए और ऐसे अभी ठीक है आप थोड़ा नजदीक आइए। हेलो हेलो अभी ठीक है So with your kind permission I start my presentation. Ode to India. India at 75 is fine, but India at 5,000, that's the dateline I prefer to sing the praise of my motherland. Srinantu Vishe Amritasya Putra. Listen, all the children of the immortal. With this invocation to the universe starts her story. From the dawn of history, she has sprinkled Shanti Jal, the holy water of peace, over the violence-ridden world. And transcending all the pain and suffering of life, she has extolled Ananda, the doctrine of joy, as the source and solace of all creation. Thus her poetry, the Rishi, proclaims the rule of Ananda in this famous Upanishadic verse. It is from joy, Ananda, that all that exist are born, and it is to joy that all depart and are withdrawn. And the Rishi clinches his argument with this literally breathtaking verse. Who will exhale and inhale if there is no joy in the sky? This, for me, is the ultimate knowledge of existence. Ananda, a state of bliss, a state of cathartic bliss. Life on earth is nothing less. As regards the doctrine of Shanti, the whole world knows that every Indian mantra, prayer, and ritual ends with this invocation of eternal peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Even Eliot in the wasteland, his modernist epic of alienation and ennui, finally ended his poetry of existential despair with this incantation. Datto, Dayadham, Dammato, Shanti, Shanti, Shanti. And what's more, he added this note himself at the end of the wasteland. Quote, Shanti, Eliot writes, Eliot's note, Shanti, Hello? repeated as here, Amma. a formal ending to an Upanishad. The peace that passeth understanding, quote unquote, the peace that passeth understanding is our equivalent to this word. This peace that passeth understanding is the wisdom of India. You stay in this country for a while and you will feel that Shanti in your heart. You can buy world peace in India's village mart. I will conclude my adoration with these profound words of a great monk of ours. Addressing the Parliament of Religions in Chicago in 1893, Swami Vivekananda had said, quote, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth, unquote. These are not empty words. These words echo the beating heart of India, the all-embracing, mighty, mystic heart of India. This world is one family, from hearth to hearth. I am an Indian poet, and I write verse for the universe. My second poem, these are regular poems, written after the death of my mother. First, the Bengali one, Gunakkore.
একটি সাঁওতাল মেয়ে জঙ্গলে প্রসব করে জঙ্গলেই ফেলে রেখে গিয়েছে আমাকে। পোকা মাকড়ের মুখে এই কথা জেনেছি আমি, দেখেছি এসব কথা ঘুণাক্ষরে লেখা আছে গাছের শাখায়। পাদ্রী ও বণিক আসে, নিঃশব্দে টহল দেয় সমস্ত জঙ্গল। ধাতুর ভাষায় তারা কথা বলে, মনে হয় আমাকেই খোঁজে। লুকিয়েছিলাম আমি ঝর্ণার আড়ালে নগ্ন হয়ে, এখনো লুকিয়ে আছি ঝর্ণার আড়ালে নগ্ন হয়ে। কেউ দেখে ভয় পায়, কেউ বলে জলের দেবতা। কৌতূহল দেখালেই প্রচণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারি। পোকামাকড়ের মুখে শুনেছি আমার মা সাঁওতাল মেয়েটি খুব নাকি কেঁদেছিল। দেখেছি সেসব কথা ঘুণাক্ষরে লেখা আছে গাছের শাখায়। Translation. Hieroglyphs. A Santal woman delivered me in the forest and abandoned me there. I have heard this account from the insects. I have read this account in the hieroglyphs of the woodworms on the tree branches. The merchant and the missionary come together and secretly survey the entire forest. They speak a metallic tongue. It seems they search for me. I hid myself behind a waterfall, stark naked. I am still hiding behind a waterfall, stark naked. Stray intruders are scared to see me. Some of them think I am the water god. I fiercely throw stones at anyone who shows the slightest curiosity. The insects told me that my mother, the Santal woman, wept bitterly before leaving me. I have read that account in the hieroglyphs of the woodworms on the tree branches. Next poem. Lastly, I'm continuing on the same theme. You can easily follow my family and my tradition. Postcard for my grandfather. Postcard for my grandfather. Postcard तो अभी लुप्त हो गया है. Postcard for my grandfather. A sea storm suddenly enters the city and calls out my name in a thundering voice. What is more, it flashes my name in letters of lightning on the dark clouds, like the name of a fugitive on a celestial billboard. That sea storm, just like my enraged grandfather, rushes into the city from our distant coastal village and bangs at every door in search of me. My wife and son are frightened by the fury of the storm, but I assured them, don't worry, my grandfather has come, looking for me. I have to go out and meet him. You please stay indoors. The moment I step out in the street, the storm slaps me hard on both of my cheeks and scolds me in the wind's furious voice. He condemns me for my selfishness, cowardice, and many lapses during the whole of last year. Once in every monsoon, my body gets rid of its rotten branches, dead snakes, and festering bugs by the thrashing of the storm. Next poem. Aliens in the metro. Aliens are seated in the metro rail. With their eyes glued to their smartphones and their headphones plugged into their ears, they have shut out the earth's reality around them. Their faces are robotic and restless, being totally commanded by the signals of the virtual world. Rows and rows of these seated aliens make a grim and scary sight. The coach has a few near-extinct humans too, some old and weak and desolate humans, some non-digital, non-virtual, nature-dwelling humans who are standing before these aloof aliens in rueful silence. Their eyes are full of ancient despair, like the eyes of mountain gorillas in Africa. One frail old man is clutching a real poetry book in his hand, like a priest clutching a cross in a dark place haunted by the digital devil. Everything in the coach is trembling to be transformed
into the icons of a vicious video game. Reality has become a Neanderthal shame. Sir, one last minute only. We are running out of time. Sorry. Okay, last one. It's appropriately named after my death. The sinister shadow of my life will someday be lifted from over my poems. Like thrown away plastic dishes after a feast, all memories of my life will be swept away by the night wind. Will my poems, at least a few lines of them, be then considered readable under the candlelight? This possibility is all. That's why, before living, one has to erase all traces of one's personal life like a cautious jailbird. That's why one has to salute the sledstone and the termites before departing. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Das. Moving on to the next participant. The next speaker is Mr. Mohan Singh. Mohan Singh is a Dogri writer, poet, dramatist, critic and translator. Besides being a freelance journalist, he is also an actor and filmmaker. He has published 15 plays, 14 street plays, 5 short plays for children, 10 poetry collections, 1 novel, 2 books of critical analysis, 1 historical analysis, and also translated 2 books from other Indian languages into Dogri. Besides, he has compiled and edited 7 books. He is a recipient of Sahitya Academy Award, Sahitya Academy Translation Prize, J&K State Academy Award, among others. So, very warm welcome to Mr. Mohan Singh. Ji, please. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उषा बारिश आया अब Close. जी हेलो ओके फिर ऐसे करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि समय के भीतर ही सारी बात हो सके। नहीं आ रही आवाज़। अब आवाज़ ओके, अब ठीक है। डोगरी में लिखता हूँ, इसलिए डोगरी में पहले पढ़ूंगा। कोशिश करूंगा उसका अनुवाद भी अगर आप तक पहुंच पाया तो, क्योंकि इतना सिद्धहस्त नहीं हूं मैं। अक्षर टुरदेन मत बातर, अक्षर टुरदेन मत बातर, जुगे जुगे तक्कर, कदें भी मुकदा नहीं दा सफर, कदें भी मुकदा नहीं दा सफर, बंड देन सारेंगी ज्ञान, इरख प्रेम लांदेन एज, आ अस भी ओई जाचा अखर इरखा परोचे, आ अस भी ओई जाचा अखर इरखा परोचे। शब्द, इसी अनुवाद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। शब्द चलते हैं मतवातर जुगों जुगों तक, कभी खत्म नहीं होता इनका सफर, बांटते हैं सबको ज्ञान, प्यार मोहब्बत करते हैं स्नेह, आ हम भी हो जाएं शब्द प्यार भरे, आ हम भी हो जाएं शब्द प्यार भरे, प्यार भरे। शुक्रिया। इयास मैमी अपने मन रथ कन्नै, जुट्टे देने सत घोड़े, मैमी अपने मन रथ कन्नै, जुट्टे देने सत घोड़े, सतरंगी किरने गी लेइयै, निकली पेदां सफरें उपर, इयै आस मना च लेइयै, चूक रवै नहीं कोई नेरी, चूक रवै नहीं कोई नेरी। यही आस। मैंने भी अपने मन रथ संग जोत लिए हैं 7 घोड़े, सतरंगी किरणों को लेकर निकल पड़ा हूं सफर पर, यही आस है मन के अंदर, रहना जाए कहीं अंधेरा, रहना जाए कहीं अंधेरा। एक और छोटी सी, इसदे कोला पैलें, इसदे कोला पैलें जे भुख
ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਵੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਵੈ, ਬਣੀ ਜਾ ਲਾਗਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਵਿਛੀ ਜਾ ਏਠ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਚ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣ ਸਿਰਾ ਪਰ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣ ਸਿਰਾ ਪਰ ਸਵਾਰ, ਖੋਲੀ ਲੈ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਉਦਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰੀਆਂ, ਸੋਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਗੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਤਰੋੜ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸੌਂਗਲਾਂ त्रोड़ उन जंग लगियां सौंगड़ा त्रोड़। बहुत अनुवाद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि भूख न रहे, हो जाए लाइलाज बीमारी। इससे पहले बहुत बढ़िया कि भूख न रहे, हो जाए लाइलाज बीमारी, दरिद्रता बिछ जाए नीचे और ऊपर, दरिद्रता फैल जाए जब बिछ जाए नीचे और ऊपर, मजबूरियां करें नृत्य बेशर्मी का, मजबूरियां करें नृत्य बेशर्मी का, अंदर और बाहर और हर समय रहें सिर पर सवार, खोल हिम्मत के द्वार, हौसलों के दरीचे, सोच के दृष्टिकोण को दे नया मोड़, तोड़ अब ये जंग लगी बेड़ियां तोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मैं मोह पाल रहा हूं कि अपनी डोगरी भी आप तक पहुंचे, आप डोगरी का फ्लेवर भी आप तक पहुंचे, इसलिए थोड़ा दोनों भाषाओं माफ करियो। जीने आस्ते जरूरी है जेकर मारना, जीने आस्ते जरूरी है जेकर मारना, तमेगी माफ करियो। मैं नहीं चाहता जीना, मारी है अपने भराएगी, ते नहीं खुआना चाहता चक्रवर्ती अशोक, ते नहीं खुआना चाहता चक्रवर्ती अशोक, ना गै आलमगीर औरंगजेब, ना गै होना चाहना राम, ना गै होना चाहना राम, ते जे तजने पवै सीता एक धुब्बे दे ताने पर, जे तजने पवै सीता एक धुब्बे दे ताने पर, मैं कृष्ण होइयै करना नहीं चाहता छल दुर्योधन कन्नै, मैं कृष्ण होइयै करना नहीं चाहता छल दुर्योधन कन्नै, पढ़ाना नहीं चाहता पट्टी कुसा भीम गी, ते ना गै खुआना चाहना अन्ना पुत्र मोच फसीए, ते ना गै खुआना चाहना अन्ना पुत्र मोच फसीए। मैं जो जनेया ठीक हाँ, जीने आस्ते समझदा नहीं जरूरी कुसागी, मारना कुसागी। मैं ते आशिक हाँ, चीरी दियां पट अपनी सोहनी आस्ते, बनवाई दियां पुल, चलाई दियां सिक्के नाप तोल गज, अपनी मोहरां दे नां पर देई दियां जान अपनी शीरी आस्ते, तां जे मरिए भी रही सकां जींदा लोकें दे दिलें च, कत्थें च कहानियें च, गीतें च गाथाएं च, जीने आस्ते जरूरी है जेकर मारना, तां मिगी माफ करियो। मैं नहीं चाहता जीना, कुसा सूरत नहीं, एक पल भी नहीं। इसका हिंदी कोशिश कर रहा हूँ। माफ करें, जीने के लिए जरूरी है यदि मारना तो मुझे माफ करें। मैं नहीं चाहता जीना, मारकर अपने भाइयों को नहीं कहलाना चाहता चक्रवर्ती अशोक, ना ही आलमगीर औरंगजेब, ना ही होना चाहता हूँ राम, कि त्यागना पड़े सीता को एक धोबी के ताने सुन, कि त्यागना पड़े सीता को एक धोबी के ताने सुन। मैं कृष्ण होकर करना नहीं चाहता छल दुर्योधन के साथ, पढ़ाना नहीं चाहता पट्टी किसी भीम को, और ना ही कहलाना चाहता हूं अंधा पुत्र मुंह में फंसकर, और ना ही कहलाना चाहता हूं अंधा पुत्र मुंह में फंसकर। मैं जो हूं जैसे हूं ठीक हूं, जीने के लिए समझता नहीं जरूरी किसी को मारना। मैं तो आशिक हूं, चीर दूं अपनी जांग अपनी सोनी के लिए, बनवा दूं पुल, चला दूं सिक्के नाप तोल गज, अपनी मोहरा के नाम पर दे दूं जान अपनी शीरी के लिए, ताकि मरकर भी रह सकूं जिंदा लोगों के दिलों में, कथाओं में, कहानियों में। जीने के लिए ज़रूरी है यदि मारना तो मुझे माफ़ करें। मैं नहीं चाहता जीना, किसी सूरत नहीं, एक पल नहीं। One last service, last.
मैं चलिए एक मैं कविता छोड़ देता हूँ क्योंकि एक कविता का मैं मोह त्याग नहीं पा रहा जो यहीं आके दो दिन पहले लिखी है, इसलिए मैं वो जरूर सुनाना जी चाहूँगा। जी, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, उसे सीधा हिंदी में पढ़ता हूँ, कोशिश करो। टाइम की मर्यादा रखनी पड़ती है, क्या करें। हेलो फरियाद हेलो फरियाद मीटिंग लो उन्नानु घंटे और घड़ियाल बजाए, ढोल बजाए, तू ना जागा, सुना ना तूने। तवज्जो चाहूंगा। घंटे और घड़ियाल बजाए, ढोल बजाए, तू ना जागा, सुना ना तूने। घुंघरू और खड़ताल भी लेकर नाच नाच कर गीत सुनाए, तू ना जागा, सुना ना तूने। तुरी कहल रणसिंगे और शंख भी फूंके, फूंक फूंक दम बेदम हो गए, ना घबराए, तू ना जागा, सुना ना तूने। नंगे पांव तपती रेत पर चलते हुए जयकारे लगाए, नंगे बदन भूखे पेट अंधेरे में रहकर तेरे द्वार पर दीप जलाए, तू ना जागा, सुना ना तूने। मौन साधना करके देखा, कुछ ना हुआ, सुना ना तूने। सुना ना तूने, लगता तुम परमेश्वर से हो गए हो हाकिम। लगता तुम परमेश्वर से हो गए हो हाकिम। हाकिम भी इस नए दौर के, जो जनता की कभी ना सुनता, कुछ ना सुनता और अंततः जनता के गुस्से विद्रोह का बने निशाना। इसलिए परमेश्वर सुन फरियाद ये मेरी, हाथ जोड़ में विनती करता, परमेश्वर ही बने रहो, हाकिम ना बनना, कभी ना बनना, कभी ना बनना, कभी ना बनना। बहुत सुंदर, थैंक यू मोहन सिंह जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर, ही इज मिस्टर कमल वोरा। Kamal Vora ji is an eminent Gujarati poet. He has published 3 collections of poems titled Arav Ananek, Vridushatak and Jutasthana. The first 3 books have received awards, including Ankek receiving the prestigious Sahitya Academy Award for the year 2016. His poems have been translated into English and other Indian and foreign languages. He is also a recipient of prestigious Gangadhar National Award for Poetry 2020 from Sambalpur University, Odisha. He co-accredits a prestigious quarterly journal, Etad, founded by late Suresh Joshi ji. So very warm welcome to Kamal Vora ji. Hello, am I audible? Yeah. Thank you, Sahitya Academy. Today's theme is India at 75. I could manage only at 75. So this is a poem from my collection Vridushatak that contains 100 poems for old age. I'll read this in Gujarati and then English translation. એને ખબર પડતી નહોતી એ ઘરડો થઈ ગયો હતો એટલે એકલો પડી ગયો હતો કે એકલો પડી રહ્યો હતો એટલે ઘરડો થઈ રહ્યો હતો. એને ખબર પડતી નહોતી આમ ને આમ ક્યાં સુધી એ ઘરડો થશે, આમ ને આમ એકલો. એને ખબર પડતી નહોતી એ ઘરડો વધારે હતો કે વધારે એકલો. એને ખબર પડતી નહોતી ઘડપણ સારું કે એકલતા. એને ખબર પડતી નહોતી એને હતો ન હતો ઘડપણે કરી દીધો હતો કે એકલતાએ. બીજમાં વૃક્ષ કે વૃક્ષમાં બીજની જેમ એને ખબર પડતી નહોતી, એને ખબર પડી નહોતી, એને ખબર પડવાની નહોતી, પણ એને ખબર પડતી હતી એ ઘરડો થઈ ગયો હતો અને એ એકલો પડી ગયો હતો. Now this reads in English translation by Gopika Jadeja. He did not know whether he was growing lonely because he was old or whether he was growing old because he was lonely. He did not understand how long he would keep growing old, growing lonely. He did not know whether he was more old or more lonely. He could not figure out whether old age was better or loneliness. He did not understand whether it was age that made him swing between being and not being, or was it loneliness?
Like the seed in the tree or the tree in the seed, he did not understand. He had not been able to understand. He was not going to understand. But he did know he was growing old and he was lonely. Thank you. Next poem is Light and Left. Left and Right, I'm sorry. And it's meant to contain all the dualities, manifest and unmanifest. Left and right. It was in the third standard, or was it the fourth? It was as late as that when we found out that one of our friends wrote with his left hand. When we compared our handwriting, we would see that the left hand produced strings of pearls, while the right elegant streams of dewdrops. Mother would say, use the right hand to have blessed foods and make solemn promises. We would always be blessed with her right hand. The watch would always be worn on the left, the amulet always on the right. Some things had to be done only with the left hand. While stepping out of the house, the right foot had to be first. When the left toe suppurated, a lamp had to be lit before the deity. The throb of right leg would echo in the left calf via the base of the thigh. We would panic when the left eye flickered and kissed the right palm, even if it itched just a little. On the right of our house, at the end of the narrow lane, lay our school, and on the left, our playground. While playing cricket, we had realized early that some players were right-handed and some left-handed. But we were confounded like never before when we saw a friend bat left-handed and bowl right-handed. Once, just for fun, when we had clapped in class and asked the teacher a riddle, which hand is clapping? One of us had his right ear twisted and the other received a left-handed slap. When the right arm would stretch out to the rising sun and the left dip into the horizon with the setting moon, our fists would contain the sun and the moon that fused in our palms as our fingers, all 10 of them, tingling with excitement, entwined each other's. When we were exhausted from our play, Mother would serve us dinner in the same plate. Left and right, left-handed and right-handed, lefty and righty, and on. We were no longer left-handed or right-handed. We became leftist and rightist. These days, once in a while, the teacher smiles among the clouds and riddles us, the applause that you hear, tell me children, which hand is clapping? On cue, the sun, as large as an empty plate, and the moon, as full as an empty plate, face each other. The roar can be heard across the heavens. Thank you. The next poem is Lies. My latest collection is titled Juttana, that is Lies. And there is a long series of poems titled Lies, so I'll pick up a few of them. And my contention is air and lies are all pervading. A man needs lies as much as he needs air. Lies. He used to lie at the drop of a hat. Ma used to twist his ears. Father used to give him nasty looks. Returning home from school, his cheeks bore marks of his master's slap. He was taught the lesson in truth, made to do experiment as well. But he was darling of lies. He decided his untruths would make such a tiny fraction on this vast earth. And he was dead sure that his eloquence, quietly disguised,
his umpteen untruths. Next. Saw with my naked eyes, listened to them with very ears. Saw with my naked eyes, listened to them with these very ears, tasted, sucked, and licked each of them. I smelt and recognized them for what they were in the depth of my chest. I touched them again and again, examined them closely, and then set them out for sale, these lies, unfathomable by the senses. Jaws wide open, tongues flapping, eyes rolling, spitting fire, crossing swords against one another, when lies chop heads and destroy one another, then from their bloody fountains come spilling more monstrous, more heinous lies, and wide open jaws, tongues flapping, eyes rolling, spitting fire, crossing swords against one another. Truth is on neither side in this war of lies, and yet the wars are real, without victory or defeat. Lies against lies, eternal wars, real wars, fought with lies. So 1 last minute you have, only 1 last minute. Yes. Believing that the word is the truth, when a poem points out the lies, or challenges them, or prepares to defeat them, then an emergency arises. When the world lies intoxicated under the spell of lies, a poem has to stand by that belief, risking its life at the cost of itself. And the small one, last one. Carrying a grain of truth inside him, man assumes that somehow he will be saved. Carrying a grain of truth inside him, man assumes that somehow he will be saved, and he befriends the lies. Lies have an ego. They assume that when the time for war comes, their victory is certain. But here is what happens. Both the assumptions are proved wrong. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful rendition. आगे बढ़ते हैं. अब जिनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ उनका नाम ही बहुत खूबसूरत है, श्री बोधिसत्व जी. बोधिसत्व जी हिंदी के प्रख्यात लेखक और कवि हैं. कई लंबी कहानियाँ और अपने गांव के इतिहास के अलावा आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं. आपकी कई कविताओं का विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उन्हें मॉस्को विश्वविद्यालय और गोवा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है. आप लाइफ ओके चैनल पर प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक देवों के देव महादेव से कथा शोधकर्ता के रूप में संबंधित थे. इसके अलावा आपने कुछ फिल्मों के लिए भी लेखन किया है. आप भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, संस्कृति पुरस्कार और हेमंत स्मृति सम्मान से सम्मानित हैं. बहुत बहुत स्वागत है बोधिसत्व जी. सभा में उपस्थित सभी बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, दादा लोगों, सबको प्रणाम कर रहा हूँ. और कितना टाइम है मेरे पास? हाँ, तो मैं 10 मिनट में ही जो पढ़ पाऊँगा सो पढ़ूँगा. भाइयों बहनों, दादियों, भाभियों, माताओं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ. मेरी कुछ बुआएं भी हैं, उनको भी नमस्ते कर रहा हूँ. और अभी मतलब हो गया मेरा आधा मिनट इनकी वजह से गया है. मृत्युंजय भाई ने बोला था मुझे पहले ही कि क्योंकि भारत के 75वें स्वाधीनता के वर्ष पर ये आयोजन है, तो कुछ कविताएं मैं ऐसी पढ़ूं जिसमें भारत की आज़ादी की उपलब्धियां इसमें जोड़ पाएं. पहली कविता पढ़ रहा हूं. भारत भारती. उघड़ी पुरानी चटाई पर एक टाट बिछाकर
उघड़ी पुरानी चटाई पर एक टाट बिछाकर, छोटे बच्चे को औंधे मुंह लिटाकर, मटमैले फटे आंचल को उस पर फैलाकर, खाली कटोरे सा पिचका पेट बार बार दिखाकर, मरियल कलुष मुख को और मलिन बनाकर, मांगने की कोशिश में बार बार रिरिया कर, फटकार के साथ कुछ न कुछ पाकर, बरबस दांत चियारती है, फिर धरती में मुंह छिपाकर पड़े बच्चे को आरत निहारती है। यह किसका भरत है, यह किसका भरत है, किसका भारत और किसकी भारती है। फिर एक छोटी कविता लीलाधर जगूड़ी सर और अरुण कमल भाई और उन्मेश भाई और अश्वनी भाई और हमारे झवेरी दादा सबको संबोधित करते हुए सुना रहा हूँ। छोटा आदमी। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ कोई उधार, जोड़ता रहता हूँ पाई पाई का हिसाब। छोटा आदमी हूँ, बड़ी बातें कैसे करूँ। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ कोई उधार, जोड़ता रहता हूँ पाई पाई का हिसाब। छोटा आदमी हूँ, बड़ी बातें कैसे करूँ। माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं कर पाता हूँ, छोटे छोटे दुखों से उबर नहीं पाता हूँ। पाव भर दूध बिगड़ने पर कई दिन फटा रहता है मन। पाव भर दूध बिगड़ने पर कई दिन फटा रहता है मन। कमीज की नन्ही खरोच देह के घाव से ज्यादा देती है दुख। एक खराब मूली बिगाड़ देती है 56 व्यंजन का स्वाद। एक चिट्ठी एक एसएमएस का जवाब नहीं देने को याद रखता हूँ उम्र भर। छोटा आदमी और कर ही क्या सकता हूँ सिवाय छोटी छोटी बातों को याद रखने के। 100 ग्राम हल्दी 50 ग्राम जीरा छींट जाने से तबाह नहीं होती जिंदगी, जानता हूँ पर क्या करूँ। छोटे छोटे नुकसानों को गाता रहता हूँ, हर अपने बेगाने को सुनाता रहता हूँ अपने छोटे छोटे दुख। आदमी हूँ क्षुद्र, ये मीरा के यहाँ से है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित। आदमी हूँ क्षुद्र, इनकार नहीं करता। एक छोटा सा ताना, एक मामूली बात, एक छोटी सी गाली, एक जरा सी घात काफी है मुझे मिटाने के लिए। मैं बहुत कम तेल वाला दिया हूँ, बहुत हल्की हवा भी बहुत है मुझे बुझाने के लिए। आदमी हूँ क्षुद्र, इनकार नहीं करता। एक छोटा सा ताना, एक मामूली बात, एक छोटी सी गाली, जरा सी घात काफ़ी है मुझे मिटाने के लिए। मैं बहुत कम तेल वाला दिया हूँ, बहुत हल्की हवा भी बहुत है मुझे बुझाने के लिए। छोटा हूँ पर रहने दो, छोटा हूँ पर रहने दो। छोटी छोटी बातें कहता हूँ, कहने दो। कितना बच गया मैडम? अच्छी बात है। एक कविता है जो मैं अंत में पढ़ूंगा, जिसका अनुवाद फिर मैंने हमारे अनुवादक को मैं साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं है, तो मैं ऐसे ही जगहों पे काम चलाता हूँ। प्लीज़। एक कविता है जो मैं चाहता था कि पढ़ूं, 75वें साल पे उसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं एक ताजिए की लकड़ी। आप लोगों के लिए दाहा निकलता होगा, ताजिया निकलता होगा। मुसलमानों के एक समुदाय में ताजिएदारी होती है, ताजिया निकलता है। एक तबके में उसका बहुत महत्व है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। मैं एक ताजिए की लकड़ी, हमारे बाग से कट कर गई गांव के ताजिए की लकड़ी।
ताजिए में जुड़कर मैं भी इस्लाम हो गया। मेरी कहानी मोहम्मद साहब के नवासों से गुंथ गई। हसन हुसैन मेरे हो गए, मैं उनका हो गया। रात के रात जो मैं ताजिया हो गया। वैसे बहुत दूर है मक्का मदीना, बहुत दूर है आमना का आंगन। वो चरवाहों की बस्ती, वो पानी के लिए हुआ खून खच्चर, वो सलीबें, धूप में सूखती लाशें। हसन हुसैन के बाग में पता नहीं महुए और नीम के वृक्ष होते हैं या नहीं। पहले मैं एक पंडित का पेड़ था। एक पंडित के बाग में पंडित को देता था फूल फल पत्ते छाया। अब जब पुराना हो जाएगा ताजिया, सब चमकदार नक्काशियां जब उतर जाएंगी, एक ढांचा भर रह जाएगा ताजिया। मैं ताजिए से फिर काट हो जाऊंगा, फिर पता नहीं कहाँ फेंका जाऊंगा। कितनी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे आगे कहीं और जुड़ने के लिए। पंडित के बाग के सब पेड़ अब भी पंडित हैं। पंडित के बाग के सब पेड़ अब भी पंडित हैं। सारे फल, सारे फूल, सारे पत्ते, सारी जड़ें, यहाँ तक कि परछाइयाँ भी, और उनके साथ मैं भी पंडित हूँ। ताजिए में जुड़ा पंडित का छोटा सा टुकड़ा, जो हसन हुसैन के आंगन की छाया है, अब भदोही के एक गांव में। फिर मैंने पाया हमारे पंडित जी ने ताजिया उठाया। जिनका मैं पेड़ था उन्होंने मुझे कांधा लगाया, गांव के छोटे से करबला पहुंचाया। हसन हुसैन की याद में आंसू बहाया भदोही के एक गांव में। ताजिया हमारे बाग की बगल से गुजरा। कुछ दूसरे पेड़ों की छाया में सुस्ताए भी ताजिएदार। और बाग के बगल वाले करबला में मुकाम पाया ताजिया ने। कई बार सोचता हूँ तो रुध जाता है गला। मन धुआं धुआं उठता है कि अगर मैं कभी गलती से भी जला तो पंडित का पेड़ जलेगा या ताजिए की लकड़ी। सर, वन लास्ट मिनट, वन लास्ट। एक 7-8 मिनट की ठीक। कविता नहीं है, 4 मिनट की जी। है। मैं सर से 3 मिनट अंदर हूँ अभी जी भी। जी। अन्याय नहीं होना चाहिए ताजिए की लकड़ी के साथ। मैं पढ़ता हूँ। शांता नाम की एक कविता है जिसका अनुवाद भाई पढ़ेंगे। प्लीज ओम भाई, थैंक यू। दशरथ की एक बेटी थी शांता। लोग बताते हैं जब वह पैदा हुई अयोध्या में अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक धरती धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही है राज्य में अकाल का कारण। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए श्रृंग ऋषि को पुत्री दान दे दी। उसके बाद शांता कभी नहीं आई अयोध्या। लोग बताते हैं दशरथ उसे बुलाने से डरते थे। बहुत दिनों तक सूना रहा अवध का आंगन। फिर उसी शांता के पति श्रृंग ऋषि ने दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। दशरथ 4 पुत्रों के पिता बन गए। संतति का अकाल मिट गया। शांता राह देखती रही अपने भाइयों की, पर कोई नहीं गया उसे आनने, हाल जानने भी कभी। मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं। शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे, जबकि बन जाते समय राम शांता के आश्रम से होकर गुजरे थे, पर मिलने नहीं गए। बिना बुलाए अयोध्या आने को राजी नहीं थी शांता। सती की कथा सुन चुकी थी बचपन में पिता दशरथ से। शांता जब तक रही राह देखती रही भाइयों की, आएंगे राम लखन, आएंगे भरत शत्रुघ्न, इस सावन उस सावन आएंगे वीरन। मैं साहित्य अकेडमी का आभारी हूँ
अनुवाद आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। बौद्धिक की इस कविता अद्भुत कविता है एंड वेरी सिग्निफिकेंट पोएम आई गेस रिसेंटली जी रुला दिया है और बहनों को भी रुलाता है एंड रिसेंटली दिस पोएम वाज पब्लिश्ड along with Kamal Bora, Prabodh Parekh, Amit Shankar Saha, 71 poets from 17 languages in the collection Rivers Going Home. तो मुझे थोड़ा अनुभव है एडिट करने का, तो इस पोएम का आप अनुवाद देखें अंग्रेजी में। शांता, Ram's sister. Dasarath, the mighty king of Ayodhya, had a daughter named Shanta. They say with her birth began a long drought for 12 years. The land turned into dust. The worried king was counseled that his daughter was the cause of the drought. To wish away the drought, the king gifted the daughter to the sage Shringi. Shanta never returned to Ayodhya. They say Dasarath was scared to invite her. For a long time, the kingdom remained gloomy, and this same Shanta's husband, the sage Shringi, conducted the Putra Sheshti Yagya for Dasarath. Dasarath became the father of 4 sons. The drought of progeny vanished. Shanta waited for her brothers to take her to the native home. None came, not even Ram, the upholder of tradition. Perhaps he too was scared of a drought in his Ramarajya. Going to the forest, though he did pass by Shanta's hermitage, he did not visit her. Shanta awaited her brothers all her life. She awaited Ram Lakhan. She awaited Bharat Shatrughan. Shanta was not prepared to come to the native home uninvited. In the childhood, she had heard the story of Sati from the mighty king Dasaratha. Ram ke vachan, Shanta, Shanta, Shanta. Thank you. Thank you. आखिरी शब्द कहेंगे। मैं आभारी हूँ, सबका आभारी हूँ, भाइयों का, बहनों का, सबका प्रणाम। Thank you so much. Thank you. I request all the participants to please stick to the time. The next speaker is Madam Pratibha Nandakumar. Pratibha Nandakumar is an eminent Kannada poet, journalist, filmmaker, columnist and translator. Her publications include 17 collections of poems, 2 collections of short stories, an autobiography, 3 biographies, 2 collections of column writings, 2 plays and 7 translations of novels, short stories, plays and biographies. She is a recipient of Infosys Award for Literature, Bangalore, Litfest Lifetime Achievement Award, Mahadevi Verma Kavya Samman, Dr. Shivaram Kannat Award, Kempe Gowda Karnataka State Award, Hooger Memorial Award for Journalism, among others. Let's welcome Pratibha Nandakumar, Madam. Thank you. Thank you for this platform. India at 75 has different connotations for different parts of India, north, south, east and west. It can never be the same. I come from Karnataka, Bangalore, and as any poet, I respond to what is around the contemporary situation around me. I'll just read one poem in Kannada and the rest in English. Hucchu kapi mattu viparita cheste. ಎಚ್ಚರ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚೆಂದರೆ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುವ ಕೋತಿ ನಾನು. ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ ಕೋತಿಯ ಹೊಸ ರೂಪ ನಾನು. ಡೋಲು ಬಡಿದ ಸದ್ದಿಗೆ ಕುಣಿವ ರೂಢಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದೆಂಥ ಮಂಗನಾಟ ಎಂದು ಅಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅತಿ ದಾಸ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕರತಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವೇ ಅಸಹಜ ಗೊತ್ತೇ? ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪೆಡಂಭೂತ ಹೊಸಿಲು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ ಹಗ್ಗ ಕೊಡಿ, ಬೇಡ ಮಂತ್ರದಂಡವಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಸಾಕು.
ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಸೀಳಿ ಹಾಕೋ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಚಕ್ಕನೆ ಸೀಳಿತು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದ. ಹುಚ್ಚು ಕಪಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾನಮತ್ತ ಕಲಾಕಾರ ಕಪಿ. ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕಾಸೋ ಅಥವಾ ಮೊದಿಲಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರೇ ತಿಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾನು ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ, ದೇವತಾ ಪುರುಷ, ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ಇತರರು ಅಂಜುವ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ನುಗ್ಗುವ ಅಂಜನಾ ಪುತ್ರ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸರಿ ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆಳೆದು ತದುಕಿ ಮುಗಿಸುವ ಸವಲತ್ತು ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏನಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಿ. The English translation, I translate all my poems myself. Mad monkey and the master act. I am the monkey that burns up the city square and the entire Lanka if you ask me to light a candle. Beware. I am the drunken monkey of a different kind. Beating the drums is a cue for me to do the tricks. Don't dismiss my fine acts as stupid monkey business. It takes more than intense madness to master the act of extreme subservience. Sanity and insanity are not equal and opposite, and hence measure your words carefully. Eccentric may be, but I am condemned by my master to obey and perform all things different and dangerous. Normal is boring. The monster is at my doorstep, already a foot inside the threshold. Hand me the rope, will you? No need for a magic wand. A rope will do. Then there was this breaking down phase created just for my convenience. Split it vertically, I was told, and I struck till the axe hit the bottom and the whole country fell apart in two halves. Don't underestimate the power of a mad monkey at his creative best. Do not attempt to read me through my acts. Keep it to your Picasso or Modigliani or other names nearer home. I do not follow the laws of your land. I am a superhero, a god, a sticker on your car. I go where others fear to enter, and I can drag out anybody by the hair onto the street, strip and lynch. I am licensed to utter absolute nonsense. My privilege, actually. Nothing is wrong with my brain. Stop analyzing it. If anything, fear my creative insanity and wait for my next move. Dread, get used to it. Or, did you say there is a method in madness? Thank you. This is called honor killing. A Hindu boy and a Muslim girl eloped. This happened in Bangalore. They got married and went into hiding. They got a child also. Their families hunted them down and killed them both in front of their 1-year-old child. And no one wanted the child. The relatives rejected. The police took her into their custody, and right now the police are bringing up that girl. Honor killing. They had covered only half the distance. The mosque was on top of the hill and the temple on the other side of the cliff. The story ended even before it started. What do you tell the little one? That once upon a time, a foolish man and the queen of sense were butchered for giving birth to her? Do not dare peep into the little one's eyes. You cannot answer the questions in them. Leave it to the National Geographic to capture the blue-green light in them. God incarnates and sometimes takes the forms of knives and swords in my country. 2. If honor killing is sacred, then we are a very religious country. If you say you have the answer and ask me what is the question, you will be hanged. The blood dries to make black stains on the road where once we played hopscotch. You can live here only if you are dead. I am appalled that there is still love in my poems. The sacred Brahmin who stepped on the dirt died of shock. Ganesh festival can also trigger a communal right here. I apologize to the dung bug. Sorry, we are only humans.
It just continued to roll the dung. Your best friend is standing behind you with a gun in hand, ready to pull the trigger. The newspapers carry the story of a displaced tribe caught stealing in the metro. And because I have come to Ujjain with the Mahakal's place, I have a series on Mahakala and Mahakali. I'll just read one poem from that in English. Mahakali and Mahakala. Mahalinga we call it. They said, go fight. That is the purpose of your birth. Intoxicated, ready to kill, she plunged into the battlefield, making mincemeat of them all. Drinking their blood, making garlands of their heads. She is Raktakshi Raktavarne, the red-eyed and the red-colored. But the demons did not dwindle in numbers. Every drop brought out another, never ending. She got tired and pleaded, enough of this war, give me love. I am consumed by lust. I must not be sent out to battle. Caught between the desire to make love or to kill, I am dazed. I ask you, is there a man who can satiate me? Then they sent him, the Mahakala, the megalomaniac Mahalinga, Mahadeva. He put out his hand to shake hers. Hello, I am Mahaka. Before he could finish, she pushed him to the ground and climbed on top. The lustful coupling, the tantric lasya of Mahakali and Mahalinga, the excessive heat and the final coming together, a cosmic explosion. Then the Devi, cool and content, said, okay, now you go, live your life. During the copulation of a man and woman, I shall incarnate as the heat of the libido. Okay. Another kind. One last. Yeah, one more. This is more recent. This is mansplain. Mansplaining is a new term that they have coined, where the men always try to explain things to women, thinking that they don't understand. That is called mansplaining. All this mansplaining was sounding like Chandrayaan, and I said, it's not rocket science, for heaven's sake. He was, as usual, inaccurate and oversimplified, like talking to a nursery child. It is possible for ChatGPT to answer follow-up questions and admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests, said the brief. Unlike its sibling Instruct GPT, it is not trained to follow an instruction in a prompt and provide a detailed response. I read it out aloud to him. He was still clueless. I said, some men have this habit of explaining things they shouldn't and don't hear things they should. Who said it's the most creative word of the year? Mansplaining is the trend, and why would he not be trendy? I did a quick search and took a screenshot and sent him. In quotes, keeps women from speaking up, from being heard when they dare, that crushes young women into silence by indicating, the way harassment on the street does, that this is not their world. It trains us in self-doubt, self-limitation, just as it exercises men's unsupported overconfidence. And finally, I showed him this. Quote, the term has been used as an ad hominem to silence debate. When you want to silence a woman, resort to mansplaining. And exactly at that point, he started to explain ad hominem. It says, quote, typically this term refers to a rhetorical strategy where the speaker attacks the character, motive, or some other attribute of the person making an argument rather than attacking the substance of the argument itself. I opened the door to walk out, and he jumped at it, shutting it, screaming, no, you're not walking out on this, and started mansplaining, but I was walking out. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. I request all the participants to please keep the time limit in mind. Next, I would like to invite Nighat Sahiba, ma'am.
Nighat Sahiba is a noted Kashmir poet, social worker, and public speaker. She has a collection of poems, Zard Panakidar, and a work translation, Kannad Vacha, to her credit. She is a recipient of Sahitya Academy Yuva Puraskar, Akbari Jaipuri Memorial Award, and Kashmiri Cultural Conference Award. So over to you, Nighat ma'am. आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले कश्मीरी में ये नज़म सुनाऊंगी, उसके बाद इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। नज़म जो है वो ये जो कविता है वो कविता के बारे में ही है। इसका नाम है पेश लफ्ज़। नज़म छन शुर निमन मदरस दपस पर इल्फ सीत अल्लाह। नज़म छन शुर निमन मदरस दपस पर इल्फ सीत अल्लाह। मंगम नाबद तिमस बर्फी पलव अचदार की छार्यम हरीरिव जाम पुशराबस तो कुन सात यथै पहरस खंडस रूशित बरस पतिकिन बिहित वदन पहरा करित बेयम खन मंज। थैंक यू। नज़म छन वेस दपस समखो तो सारे काम त्रवित वाते मंगस कह राय मसलन पेट तो हावेम तजुर्बन हुन गाश दपस दाग छम दवा बावेम वदस ब्रोह कन तो वद वापस दपस छरम में अख नौ वत दपेम पाक बुत से पत पत। नज़म छन जर्दपन हर दुख जिसमरावन तजालन धंदगी मोकले। थैंक यू। नज़म छन जर्दपन हर दुख जिसमरावन तजालन धंदगी मोकले पकस पिठकिन करस लतमुंड तो वापस बस अकिस ब्रिंजिस अकीक रख दित सरेंडर करे पेस पेट शीन सूंतस याद छा रोजा किताबन हिंद वरख खुद गए। थैंक यू। नज़म छन स्युन रनन सरित हेचित सूंचित रलावस पन्ने मर्जी पेट चकेर मदरेर मेचर तलित शीरित तो मुश्कवित निमन ब्रोह कुन खेन वालन तुतुई यूता वया आसक। नज़म छन लाइब्रेरी येल खुश करम अंदर अचित तुल सुई सहीफा युस वयान आसम दिमस्ता सारन शल्फन तो अलमारिन यमस फीरित किताबन गरद वथरावस तो गाहे दूंस दितने रस। नज़म छन साजगर शीरित पीरित थावे खंडरातन नज़म छन साजगर शीरित पीरित थावे खंडरातन तिलिस्मती तरीको सित बुजुर्गन यावन अन वापस बिचारन तिलिस्मती तरीको सित बुजुर्गन यावन अन वापस बिचारन अड़गरन सखनन उरूजिक जाम वलविल थावे परावित तो छनमित रिश्त कर कायम रनेमित दिल लबन मरहम तो बछच अच लबन खेंचन। नज़म छन कूर प्रत कुन फैसलस चैनिस करी सरखम नज़म छन कूर प्रत कुन फैसलस चैनिस करी सरखम नज़म छन आब यथ बानस बरहन तथी शी बासे नज़म छन मोज प्रारी वंसवादन ब्रांद पविस पेट। नज़म छन मोज प्रारी वंसवादन ब्रांद पविस पेट ये मंग हस्ती करी हाजिर अचन हुन गाश ताचावी। नज़म गई बाल वसविन कोल नज़म गई बाल वसविन कोल ये छन छारान वथावक न प्रारा उंज थफ करनस नज़म गई जिंदगी खुशकिस्मतन वाता च पादन तल युवा पानई गछा पानई। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैं इसका हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। ये हिंदी में ट्रांसलेट की है डॉक्टर सतीश विमल जी ने। नहीं बच्चा है ये कविता जिसे गुरुकुल में ले जाऊं कहूं पढ़ अलिफ से अल्लाह। नहीं बच्चा है ये कविता जिसे गुरुकुल में ले जाऊं कहूं पढ़ अलिफ से अल्लाह। वे गुड़िया के लिए जो मांग ले कपड़े हरीरी जामवर दे दूं। किसी क्षण वो यूं ही पल भर जरा रूठे छुपे दरवाजे के पीछे जरा रोए मगर फिर लौट कर आए मेरी ही गोद में बैठे। नहीं बच्चा है ये कविता। नहीं कोई सखी कविता जिसे कह दूं कि आ मिल ले वो सब कुछ छोड़ कर आए। मेरी जितनी समस्याएं उसी से राय ले लूं मैं
वो अनुभव की प्रभा दे दे। कहूँ उससे कि पीड़ा है, वो उसकी औषधि दे दे। मैं रोलूं तो वो भी रोले, मैं कह दूं मैंने ढूंढा है नया रास्ता, वो कह दे चल मैं तेरे संग। नहीं कोई सखी कविता, नहीं कविता ये पतझड़ का जर्द पत्ता, नहीं कविता ये पतझड़ का जर्द पत्ता, जिसे लाऊं जला डालूं, मैं पालूं उससे छुटकारा, कुचल दूं अपने पैरों से। नतीजा ये कि वो एक अल्प क्षण में जरा सा चीख कर ले सरेंडर, फिर उस पर बर्फ गिर जाए। फिर उसके बाद बहारों को कहाँ रहता है याद, कहाँ बिखरे कहाँ खोए किताबों के वो पन्ने। नहीं कविता ये पतझड़ का जर्द पत्ता, नहीं सालन है ये कविता, नहीं सालन है ये कविता, जिसे मैं देख लूं समझूं सीख लूं और फिर पका लूं, अपनी मर्जी से मिला लूं उसमें खट्टा और मीठा जो मुझे चाहिए, तलूं ढंग से वो महका दूं, परोसूं फिर मैं खाने वालों के आगे, बस इतना जितना उनके मन को भाए। नहीं सालन है ये कविता, ये कविता पुस्तकालय भी नहीं है, ये कविता पुस्तकालय भी नहीं है, जो मैं चाहूं तो जाके बस वही एक ग्रंथ ले लूं, जो बाए सोच को मेरी करीने से सजा लूं, सभी शल्फों को दराजों का सफर कर लूं, किताबों से घर जाड़ूं, मैं ग्रंथों को बखेरूं और निकलूं, मैं ग्रंथों को बिखेरूं और निकलूं। ये कविता पुस्तकालय भी नहीं है, नहीं कविता कोई श्रृंगार कन्या, नहीं कविता कोई श्रृंगार कन्या, बुहारे और सजाए खंडरों को, तिलिस्म से बरी वो अपनी क्रिया से, तिलिस्म से बरी अपनी क्रिया से, वो लौटाए बुजुर्गों का गया यौवन, बिचारे अधखड़े शब्दों को वो औचित्य का श्रृंगार कर ले, सजा दे और टूटी रिश्तेदारी को बना दे, सभी जीर्ण पड़े दिल पाए मलहम और सब भूखे नयन यूं तृप्त हो जाएं। नहीं कविता कोई श्रृंगार कन्या, नहीं बेटी है ये कविता, नहीं बेटी है ये कविता कि हर निर्णय तुम्हारा सर झुकाए मान जाएगी। ये कविता जल नहीं है कि तुम जिस पात्र में भर लो ये उस जैसी ही ढल जाए। ये कविता जल नहीं है कि तुम जिस पात्र में भर लो ये उस जैसी ही डल जाए। ये कविता माँ नहीं है जो युगों तक घर की चौखट पर तुम्हारी राह देखेगी। ये कविता माँ नहीं है जो युगों तक घर की चौखट पर तुम्हारी राह देखेगी। उसे जो कुछ भी तुम मांगो वो लेकर आ ही जाएगी, पिलाएगी तुम्हें अपनी आँखों की नज़र तक। वो माँ नहीं कविता। ये कविता एक नदी पर्वत से गिरती है, ये कविता एक नदी पर्वत से गिरती है। इसे रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं चाहिए, कोई उंगली पकड़कर ले चले इसको, नहीं ऐसा नहीं है। ये कविता जिंदगी है, ये कविता जिंदगी है। खुशनसीबों के ही कदमों तक चली आती है ये खुद ही, चली आती है ये खुद ही, चली जाती है ये खुद ही। शुक्रिया। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट participant of this session, Madam Subhashri Lenka. Subhashri Lenka ji is a poet and social worker who currently heads the Sambat Sahitya Ghara, Odisha's largest literary organization, as its state coordinator. She is one of the most well-known voices in the Odia contemporary literary scene. Her publications include Asha O Akashare Aji Janha Nahi, English anthology Nightscapes, से शब्दमणि समरया उपकथा and Hindi anthology अपनी परिधि का आकाश. She has been felicitated with numerous awards and honors for her contributions within Odisha and outside. A warm welcome to you, Subhashri ma'am. यहाँ उपस्थित सबको मेरा सादर नमस्कार। साहित्य अकादमी के सभापति माधव कौशिक जी सर को मेरा प्रणाम। के शिवारेड्डी सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं उड़ीसा से हूँ, इसीलिए मेरी पहली कविता उड़िया से शुरू करूंगी। कविता की शीर्षक झिया। से चित्र अंकु की गुड़ी उड़ऊ ताकू करिबाको दिया, से चित्र अंकु की गुड़ी उड़ऊ ताकू करिबाको दिया, से कराटे सह भरतनाट्यम शिखुची, बैडमिंटन खेल रे पड़िशा घर पुओ को हरई देउची, तो कौन हैला राति रे स्कूटी धरी एका एका बाहरी जाउची आइसक्रीम खाइबाको, व्यस्त हुअनी ताकू छाड़ी दियो छोटो छोटो खुशी साउंटिबाको। रविवार दिन सारा धूम सोईची, से सारा संध्या गुणु गुणु गीत गाइची। एबे से टीवी सामना रे नेटफ्लिक्स, कॉफी मग, आलू चिप्स सहित। राति रे बराद अछि चिकेन डोमिनेटर पिज्जार, ताकू उपदेश दियोनी भूल ठीक कि तम निज रुचिर। मेरी कविता की शीर्षक बेटी। वो चित्र आके या पतंग उड़ाए उसे करने दो। वो कराटे के साथ भरतनाट्यम सीखती है, बैडमिंटन में पड़ोस की लड़के को हरा देती है बार बार, तो क्या हुआ? रात को स्कूटी लेकर अकेले निकल जाती है आइसक्रीम खाने। परेशान मत हो, उसे जाने दो, छोटी छोटी खुशियां समेटने दो। रविवार की दिन भर खूब सोई है, पूरी शाम गीत गुनगुनाती रही है। इस वक्त वो बैठी है टीवी के सामने, नेटफ्लिक्स, कॉफी मग, आलू चिप्स के साथ। रात के लिए ऑर्डर किया है चिकन डोमिनेटर पिज्जा। उसे उपदेश मत दो गलत सही का या अपनी रुचि का। उसके कंप्यूटर के पन्नों में भरे हैं कुछ अधकही बातें, कुछ कविताएं, कुछ उद्दाम कामनाएं, कुछ आप बीती अनकही बातें, भाभी सपने और योजनाएं। इनमें तुम बिल्कुल टांग मत अड़ाओ। उसके मोबाइल को उसके अनजाने में मत जांचो। अपनी रूढ़िवादिता पर लगाम लगाओ। पहनने तो उसे पोशाक मन मुताबिक, स्कर्ट, कुर्ती, जीन्स, दुपट्टा। पैनी नजर से मत देखो उसकी खुली बाहें, पीठ या उघड़ा पेट। वो गाड़ी चलाए या मन करे उसका हवाई जहाज सीखने का, तुम घबराओ मत। छोड़ दो उसे उड़ने के लिए अपनी परिधि के आकाश में। उसकी पसंद का लड़का शायद तुम्हारी जात, धर्म या भाषा का नहीं है, इसका जरा भी अफसोस मत करो। वो मिटा चुकी है सारी विभाजक रेखाएं। उसकी रगों में भी तुम्हारे ही जैसा खून, तुम्हारी तरह वो भी इसी दुनिया का है। उसकी राय को सम्मान देना सीखो। वो खुद को तोड़े, जोड़े, संजोए, चलते चलते चोटिल हो जाए, खून बहने लगे, फिर से उठकर राह बनाए, भीड़ में खुद को तलाशे, बनाए अपना नीला नक्शा। हंसे, रोए, प्यार करे, प्रताड़ना की आंच सहे, विष या अमृत खुद चुने, कांटा या फूल दोनों परखे, आग से तपकर खरा सोना बनकर निखरे। ये समाज के बड़े पंडे पुजारियों, परिवार परिजनों, पड़ोसियों, चुनने दो उसे अपनी राह। आधी धरती का अधीश्वरी है वो, आधी धरती का अधीश्वरी है वो, बनाएगी वो अपनी राह। विजयी होगी हर युद्ध में, विश्वास रखो, विश्वास रखो। मेरी कविता 3 स्वीकारोक्ति। अन्वेषण। याद नहीं आ रहा है अभी, ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हारे बाएं ओठों के नीचे का दिल, तुम्हारा चतुर चुलबुलापन, तुम्हारे बदन की कस्तूरी महक, तुम्हारे कमर के झूलता चाबी का गुच्छा, जुड़े का गजरा, पैरों में महावर की लकीरें, शर्माई सी लाल मुस्कान या तुम्हारा निर्मोह आत्मसमर्पण। नन्हा पाप। तुम्हें अनंत समय तक पाने की पिपासा कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि लगता है काश
आ जाता कोई सुनामी, भूकंप या अचानक कोई बवंडर, उजड़ जाता तुम्हारा घर, तुम्हारे परिवार के सबका अस्तित्व, और तुम रुक जाती हमेशा के लिए मेरी बाहुबंधन में। करीब आ जाओ, इतने करीब ले आओ खुद को कि हवा भी राह न मिले, थम जाए एक बिंदु में, धीरे धीरे जलती रहे कोमल दीपशिखा, मुंह छुपाकर दूर खिसक जाए ना समझी कि तमाम उलझे सुत। आओ नई सुबह के गीत गाने, आज रात मेरे करीब आ जाओ, आओ आज रात मेरी करीब आ जाओ। मेरी कविता के शीर्षक चाट मसाला। बोन चाइना की प्लेट में दही बड़े सजा रही थी रुचि। बोन चाइना की प्लेट में दही बड़े सजा रही थी रुचि। बड़े ओहदे पर है उसका शौहर, बड़े अदब कायदे, बड़े ठाट बाट है उसके। आज की खास पार्टी के लिए पहने डिजाइनर कुर्ते के लंबी बाहों के नीचे छुपा रखे थे सिगरेट के जले दाग। सिल्क प्लाजो के नीचे बेल्ट की मार से उभरे नीले दाग भी। दासी की तरह पत्नी को बस में रखने में वास्तविक आनंद मिलता है उमेश को। हरी मिर्च, धनिया पत्ती, प्याज, टमाटर छोटे छोटे काट रही थी चाकू से लोरा और एलिना। बोट नेक की लाल गाउन के भीतर से दमक रहा था लोरा का हीरे का लॉकेट। कितने कैरेट का है, पूछ रही थी एलिना। भला वो क्या जाने उसकी जलन। राजन का अगला प्रमोशन निश्चित करके 2 दिन पहले लौटी है वो उसके बॉस के प्लेजर ट्रिप से, इस शीतल आग का उपहार गले में लटकाए हुए। अच्छा परिवार, अच्छी छत्रा हुई तो क्या। एलिना कुछ सांवली है, काफी देर से शादी हुई उसकी। बाद में जुड़वा लड़कियों को देख मुंह फिर लिया ससुराल वालों ने, तभी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी मजबूरी में। आर्थिक स्थिति डबाडोल है अभी। उधर संयुक्त परिवार की यातनाएं बढ़ती जा रही है दिन व दिन। गाढ़ी मेकअप की तले छुपाए है जतन से उसने आंखों के नीचे के काले निशान। उधर चाट की प्लेट में काला नमक, अनारदाना और आमचूर मिला रही थी सोफिया। अपना मुरझाया हुआ गोरा चेहरा कब तक छुपाएगी। दुपट्टे से ढककर मौसरी बहन सबनम से उसके शौहर आमिर के निकाह करने के बाद किससे कहे सीने की जलन। खट्टा मीठा तीखा नमकीन चटपटा स्वाद बिल्कुल सही था प्लेटों में। चाट, दही बड़ा, कबाब, तंदूरी चिकन, 2-3 तरह की वाइन के साथ था मिंट फ्लेवर का हुक्का। रविवार की सुस्त सांझ को उद्दीपित कर रहा था दम मारो दम गीत। जिनेत के साथ नाच में पग मिला रही थी चारों सहेलियां ढेरों साल बाद, अपने लिए अपनी मर्जी से कुछ वक्त निकालकर। क्रमशः टूटती जा रही थी सारी बेड़ियां। इधर उधर बिखरे हुए थे मुखौटे, डगमगा रहे थे पैर हल्के नशे में। पसीने से तर चेहरे के नीचे एक जैसे दिख रहे थे सबके घाव और पीड़े का निशान। बेरंगी लग रही थी प्लास्टिक की मुस्कान। यूट्यूब में तब्दील हो रही थी गीत की धुन। कमरे के बाहर की बाकी बची दुनिया के लिए प्रवेश वर्जित का एक अनलिखा साइन बोर्ड लटका हुआ था। मैम प्लीज फिनिश करें प्लीज, सॉरी टाइम कम है। सर को भी सुनना है हमको। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सॉरी फॉर दैट, बस टाइम लिमिट है। अब हम अपने चेयरपर्सन मिस्टर के शिव रेड्डी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका आज बर्थडे भी है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर।
So, K. Shivareddy sir is an eminent Telugu writer and poet. He has to his credit 20 poetry collections and 3 volumes of complete poetry up to 2014 and 2 more collections in 2015 and 2016. He has translated 20 poems of South African, European and Latin American poets into Telugu. And he wrote script for an offbeat film called Jogini. He is recipient of Sahitya Academy Award, Kabir Samman, Gangadhar Samman and many other awards. So I request Shivareddy sir, so please start. I thank all of you for sitting patiently. I don't know any of the languages which was used here. If you ask me, do you enjoy? Certainly I enjoyed. Without knowing the language, how can you enjoy? Is it possible? Sound is more important. I can understand the essence of each and every poet's poems. The undercurrent, the underlying thing, you know, what you call universal, that is. If poetry is not going to give that, what else it can give? Nothing else. It's very difficult, you all know, to control the poets. They are uncontrollable from the beginning, from Milton to now. Milton said, book is the lifeblood of the writer. Not only the book, each poem is the lifeblood of the person. Milton wrote Paradise Lost, you all know, saying man's disobedience to God. But paradoxically, he created Satan, who rebelled against God and was thrown into a hell along with his companions. And then he wanted to raise the spirit of the followers. He said, would you like to be slaves in the hell? Would you like to slaves in the here freedom and slaves in the heaven? He was raising them, inspiring them like that. I think our roots of the poetry is there. All poets, Pauranic or Vedic, or whatever it may be, their main theme is protest. There is no poetry which is not protest. You cannot write good poetry supporting a bad ruler. You cannot escape politics. You cannot escape the surrounding things, circumstances and all the things, you know. But we survive. We can convert everything into a piece of art. Not the theory, but everything that comes to you, you make into a piece of art. Unless it is a poem, unless it is an art, you cannot enjoy it. All of you know. All of you veterans and much experience is there for you in writing poetry, novel, this and that, all you know that. I think Eliot said, a poem can be experienced before it is understood. Is it possible? I think it is possible. All of you know from the experience. From the beginning, at the beginning we make sounds. And all poets make sounds without bothering the depth of silence. Silence is the core of the poetry. I am 81 running. If you ask me what you have learned, I am branded as a left poet. If you ask me what you have learned from all these years, 81 years, 60 years of writing poetry without deviating, if you ask me, I come to now the greatness of silence. I come to know the greatness of love.
This is the very important, you know. You must tell the people how to love. Love is the basic thing, you know. All the revolutions are there, our struggles are fought for the sake of love only. You ask any great revolutionary, the basis is love. Without love, there is no life. Is it not? All of you know that, you know. That's why the core of all your poetry, who read the poetry should be the basis. I hope it is the basis. Is it not? Then I have been writing since 60 years without compromising. Is it difficult? Difficult. As you know, the life has become complex and complicated nowadays. When I began to write, the life was not like this. Now it is, all of you know, complicated, complex, agonized, so much disturbance, so much sadness. All these things are there, you know. Now, the poets who begin to write now, they face more problems than we were. Is it not? That is, I hope that is so. That's why to write poetry now is very much more challenging and very difficult also. Getting all the diversified and difficult, separated, congregated, fragmented, all these things, you know. Taking all these things, so many theories also came here, so many things are there, you know, Dalitism, feminism, all these things are there. How to capture the spirit of all these isms? Unless you grasp and understood, imbibe those things into your poetry may not be a poetry. You have to grasp, you have to understood, you have to imbibe, you have to digest, you have to absorb all the things. Poetry is the essence of all these things. You know. What is life? I think I should not make much speech. I read out 2-3 poems of mine. I am very happy. This was also a poem, what you said. Whatever it may be, sir. Siva Reddy at 25 or 30 is different, was different than Siva Reddy at 81. I came to know what is a tolerance, what is a forbearance, what is a life. To bear others' opinion, to respect others' opinion, that is democracy. What is democracy? To tolerate others. That is the basis of democracy. Are we surviving democracy? I hope we are surviving. After completing 75 years of Indian independence, still we are surviving. Somehow, some democracy is existing because of that spirit which we have. That is the spirit of Bharat. Is it not? I think all of you know that. So I read out 2-3 small poems. This is my last book. Last book means 20 volume or huh? This was translated. This is not last. I want to live 100 years. I wrote a poem. A small poem I will recite in Telugu, try to translate. ఎంతకాలం బతకటానికి వీలుంటే అంతకాలం బతకాలి. How long you want to live? Live. Why? We don't know whether we put our feet in this beautiful world. The world is so beautiful. Now if you ask me, I recognize the beauty of the people, beauty of the land, beauty of the geography, beauty of the animal and the trees and all those things, you know. I think that is the siddhi of tapas. Buddha told us this. Sanchistupa, so many things, you know. The essence of all religions is forbearance, tolerance. We are forgetting. Poets ought to tell the people this one. I will read out. The changing times, you know, life has been
changing and approach to the things are changing. That's why to be a family head was happier thing in olden days. Now it's very difficult. So many things coming into things and disturb you. Children disturb you. When you have a big spacious house, each room for each child and someone, you must have a interconnection phone or something. It is dividing. The house is meant for a division. We have to tell them that you should. I told my brother's son, at least once a while, evening or daytime, all of you family members come together, dine together. Okay. This is a small poem. It's named as Don't Recognize. He is standing under a tree, saying, didn't recognize. He is standing before an animal and saying, don't recognize. He is standing before a lake and saying, don't recognize. He is standing before a lake and saying, don't recognize. He is standing before a house and saying, don't recognize. He is standing before a person and saying, don't recognize. He is standing before a mirror and saying, don't recognize, don't recognize. That is the situation where we are now. Say another small poem. A small book in hand, like a bird. A small book in a hand like a bird. Don't have to read it. Like electricity. It flows into your body. Even if you don't read the book, like electricity, it flows into your body. Electricity has no language. Has no conversation. If you know how to read it, that language of electricity, if you know how to read it, poetry can be understood. If you know how to read the language of electricity, poetry can be understood. A language that has no language, a silent conversation can be understood. A language has no language, a silent conversation can be understood. A book is not an ornament. It is very being. Book is not an ornament, it is very being. I hope this is enough. The sample is there. There are many things. Time is. One more. Yes. No, because celebrating like this. The title of the poem is Bridge. I have been walking on this bridge for the last 50 years. No change. Has just become a bit fat. The bridge has become a bit fat, grown big. Do things to have age? Have old age? Carrying everything, carrying on the burden of saying that they don't live longer. Do they complain?
the bridges or anything, non-living things? Do they complain? Do they grieve? Do they look forward in someone relieving them from the burden? Do they waiting for someone to relieve the burden? Eyes can't see. Eyes can't see. The back is bent. The back of the bridge is bent. For the past 50 years, is this bridge carrying me? Or am I carrying the bridge? For the last 50 years, the bridge is carrying me, or am I carrying the bridge? Lal salams to the bridge. Lal salams to the bridge. That has not collapsed. That is more important. Lal salams to the bridge that has not collapsed, even though the back is a bit bent. Thank you so much. We'll you, have sir. a Thank you. group photo of the participants, please. One group photo. And valedictory session is in Gauranjini Sabhakar at 6 p.m. Valedictory session. I thank all the poets who took part in this